Jai Hind, dear students. This is civics, and we were understanding about democracy. I hope you are going through the lessons very well, and there is no doubt left about democracy because we have read a lot about democracy, and at last we are going to understand or we are going to sum up the lesson on democracy. So, with the heading broader meanings of democracy, it is given here. In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. The most common form that democracy takes in our time is that of representative democracy. So in this chapter, we have so far understood about all aspects of democracy. Now, what does the broader meaning defines? So broader meaning means, if we talk about democracy, democracy is not just the word democracy is not just the representative form of government which provides us equality and which provides us better form of government, but democracy must be in every aspect of our life. Okay, it is not limited to the government which runs the country, but in every aspect and every part of life democracy is required. If we take the example of our family also, democracy is required because a decision taken by a single person of the family may be or may not be true. So that particular part also requires democratic form of decision or power taking decision of power of taking the decision must be in the hands of every individual, and collectively they could take the decision, so that can be the better option. So here this becomes necessary because the majority people rules the country. So that's why it becomes necessary that modern democracy involves such a large number of people. So मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा पीपल होते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के डेमोक्रेसी को रन करते हैं. दैट्स वाई it is impossible, physically impossible to sit together and take a collective decision. 130 crores of people cannot sit together at a place and take the decision. That's why their representative take the decision on behalf of them. And even if they could, the citizens are not interested. So अगर वो कर भी सकते हैं ऐसा कि 130 करोड़ लोगों के साथ बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं, which is impossible, but अगर कर भी सकते तो the citizens are not interested in doing so, because everyone is busy in their life, so they are not interested to go and sit and discuss for the country. So this gives us a clear idea to understand democracy, and this clarity helps us to distinguish democracies from non-democracies. ओके इन पर्टिकुलर चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसीज जहाँ पर होती जिन कंट्रीज़ में, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं. बट डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के अंदर हम डिफरेंशिएट अभी भी ठीक से नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स एंड देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो. सो हियर if we go to the broader meaning of democracy, you have to understand this, that we are very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. So this statement makes it clear that in every family also democratic form of decision taking power can be delivered. So here, like your opinion, if it doesn't matter much, so in your family democracy is not going on. Okay, I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. So this is the statement given by any of the student, like he don't like the teachers जो doubt पूछने से मना करते हैं या बीच में बोलने नहीं देते. सो दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर बोलने का अधिकार नहीं है.
and then one leader and his family members decide everything in the party, how can they talk of democracy? If one leader and his family अगर वही सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, सो वो डेमोक्रेसी की बात कर ही नहीं सकते. ओके, so these are these ways of using the word democracy go back to its basic sense of taking decisions. So ultimately taking decisions पर ही ये चीज़ आकर के रुक जाती है कि डेमोक्रेसी मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर जो होगा वो किसके हाथ में होगा अल्टीमेटली. एंड फैमिली या किसी स्कूल या क्लास या किसी भी पर्टिकुलर एरिया की हम जब बात करते हैं तो सभी में इट इज़ it comes to the same point that decision making power या equality या doubts पूछना, ये सारी चीज़ें कहाँ पर प्रोवाइड हो रही है. if everyone is having the same rights or equality, or they could ask the question, they could speak, they could discuss, then there is democracy. Otherwise there is not. Okay, some more statements are there. True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. ये भी किसी का स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी को लेकर के बयान है. लाइक तभी ट्रू डेमोक्रेसी आएगी कंट्री में जब कोई भी भूखा अपने बिस्तर पर नहीं सोएगा. In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. So for that you don't need just an equal right to vote. Every citizens need to have equal uniform basic education, equal resources, lot of commitment. So if we talk about this particular statement, democracy में सिर्फ decision making नहीं होता है. Okay, it doesn't matter कि आपके पास decision making power है या नहीं, but this country belongs to all, each and every citizen. So इसके resources, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, सभी का बराबर अधिकार है. तो ये सभी लोगों को बराबर मिले, देन वी कैन से दैट दिस इज परफेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, सो हियर इफ यू टेक दिस आइडियल सीरियसली, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी. अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें तो कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो भूखमरी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो गरीबी हो, और इफ यू टेक द एग्जांपल इन द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, देयर इज़ अ सिंगल पार्टी सिस्टम इन चाइना एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान. सो सभी लोगों को बराबर अधिकार अपना नहीं मिलता है. सो देयर इज़ ऑल्सो परफेक्ट डेमोक्रेसी डजंट एग्जिस्ट. सो yes, now yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. So the same thing is repeated again and again. Basically the idea is that a perfect democracy is where the people must have decision taking power, the people must have enough food to eat, clothes to wear, they must be equally treated, they must have equal resources to enjoy, and the basic necessities of life must be fulfilled, and they must have right to vote, right to elect their representatives also. So that could be the perfect democracy. Okay, that this idea is given here. So yes, this chapter is over. Now we'll move on to the exercise part. Okay, now in exercise part, in this book different type of questions are given. Let us understand. Number one, here is some information about about 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Right, democratic, undemocratic, or not sure against each of these. So just like different exercises were there in your previous book, so here also you have to write democratic, undemocratic, or not sure against each of the 4 countries given.
सो कंट्री ए, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव राइट टू वोट। एक कंट्री है जहाँ पर पीपल को जिन्होंने कंट्री की ऑफिशियल रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया है उनके पास राइट टू वोट नहीं है। सो क्या ये डेमोक्रेटिक होगा? नो, दिस इज अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि डेमोक्रेसी में रिलीजन का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कंट्री बी, द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। सेम पार्टी, अगर एक ही पार्टी लास्ट 20 साल से चुनाव जीत रही तो क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? Now here it can be democratic, it can be undemocratic. Why? क्योंकि अगर अच्छी पार्टी है तो डेफिनेटली वो जीत सकती है, सो इट इज़ डेमोक्रेटिक। बट अगर एक ही पार्टी 20 साल से जीत रही है तो हो सकता है कि वहाँ पर जो लॉज एंड रेगुलेशंस है वो ठीक नहीं हो, सो इट कुड बी अनडेमोक्रेटिक ऑल्सो। ओके, सो वी कैन राइट नॉट श्योर। देन कंट्री सी, रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस। सो रूलिंग पार्टी अगर आखिरी 3 इलेक्शंस हार चुकी है तो वो कैसे रूलिंग पार्टी हुई? फिर रूलिंग पार्टी लास्ट इलेक्शन हार सकती है, नेक्स्ट इलेक्शन हार सकती है, लेकिन रूलिंग पार्टी है तो वो लास्ट 3 इलेक्शंस कैसे हार सकती है? और अगर 3 इलेक्शंस हार गई फिर भी रूलिंग पार्टी है, सो इट इज़ अनडेमोक्रेटिक। कंट्री डी, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है तो वो कंट्री भी अनडेमोक्रेटिक होगी, क्योंकि फिर इलेक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। ओके, हियर ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम। दिस इज योर होमवर्क, रीड इट एंड राइट अगेंस्ट इट। थैंक यू।